हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट। अभी हमने ये नई सीरीज शुरू की है बायोलॉजी सीरीज़। इसमें हम बायोलॉजी के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अ क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड आवर यूनिट नेम इज़ वर्ल्ड ऑफ लिविंग. So chapter is life process. First of all, we discuss about what is a life process. The processes that are necessary for an organism to stay alive are called life processes. वो प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. देयर आर 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस which helps to decide whether the something is alive or not alive. 7 ऐसी प्रोसेस हैं जो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि कोई चीज़ या कोई वस्तु जिंदा है या मर चुकी है. फर्स्ट इज मूवमेंट. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैन मूव. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन मूव, बट प्लांट्स मूवमेंट इज क्वाइट वेरी स्लो. प्लांट्स रूट्स में मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड प्लांट्स शुड मूव टुवर्ड्स लाइट. On the other hand, animals can move quickly and can move their entire body. They can move in the search of food, shelter or to protect themselves from danger. अब आपने देखा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो मूवमेंट है बहुत स्लो होती है, बट प्लांट्स रूट्स जो है नीचे की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ ग्रो करती हैं और प्लांट्स के जो शूट्स हैं वो लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं. ऑन द अदर हैंड द एनिमल्स कैन मूव क्विकली. जो एनिमल है वो अपनी पूरी बॉडी को, इंटायर बॉडी को मूव कर सकते हैं. सो ये तो दोनों में क्राइटेरिया होगा. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी आउट फ्रॉम द फूड वी ईट. देन द ऑल थिंग्स respire because they need energy to grow and do to all activities of life. रेस्पिरेशन जरूरी प्रोसेस है. रेस्पिरेशन का मतलब टू गेट द एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो हमें एनर्जी चाहिए फॉर लिविंग, टू लाइफ. नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग environment. Animals respond quickly to their stimulation such as stimulating towards heat called as receptor in body is called thermoreceptor present in skin. हमारी स्किन में हीट को सेंस करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोरिसेप्टर. नेक्स्ट इज लाइट. लाइट की सेंसिटिविटी को सेंस करने के लिए फोटो रिसेप्टर, दे आर प्रेजेंट इन आईज. थर्ड इज साउंड नोन एज फोनोरिसेप्टर प्रेजेंट इन ईयर्स. टेस्ट गेस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन टंग. odor or smell olfactory receptor present in our nose epithelium. On the other hand, the plants generally less sensitive that respond to stimulation. Growth. All living organisms grow, but plants growth is and grow their entire life, but animals stop their growing when they become adult. Exertion. Excretion. All living organisms make waste product and need to be exit out from body. एनिमल्स एक्सर्ट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. जो एनिमल्स अपने वेस्ट को कैसे एक्सर्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. प्लांट एक्सर्ट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन. गम और रेजिन की फॉर्म में अपने आप को एक्सर्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन. 6th प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ द लिविंग गिविंग बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग और बेबीज बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. Last is nutrition. The process of the taking the nutrients from the food by an organism and digest, absorbed and utilized into energy by other body is called nutrition. उनकी बॉडी के थ्रू फूड को यूटिलाइज करना और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और इन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट, वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन टर्म इन डिटेल. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ nutrition. First we discuss autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition. The word auto means self and trops means nutrition. Definition: the mode of nutrition in which an organism make their own food themselves by using some raw materials like carbon dioxide, water and sunlight. This is called autotrophic mode of nutrition. All green plants attain the autotrophic mode of nutrition. Next term is autotrophs. The organism who attain the autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. For example, all green plants, phytoplanktons, some group of algae and bacteria. Green plants हम जानते हैं. phytoplankton जो पानी में पाए जाने वाले algae होते हैं और छोटे छोटे photosynthetic plants होते हैं, उन्हें phytoplanktons कहते हैं. And some other algae and bacteria.
Autotrophs use simple inorganic material and convert into complex high energy molecule of carbohydrate. ये क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं. Euglena attain the both heterotropic and autotropic mode of nutrition. So the Euglena make their food by photosynthesis also. एकमात्र एक ऐसा एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को प्रिपेयर करता है. अदर आर प्लांट्स. The term photosynthesis. The word photo means light and the synthesis means to build. Definition: the process in which the green plants convert simple inorganic substance like water, carbon dioxide into complex organic food like glucose C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll. This is a formula of glucose, important one. The term photosynthesis was given by Charles Reid Barnes in 1893. Diagram of photosynthesis. The process of photosynthesis, see in the diagram. In presence of sunlight, carbon dioxide goes inside the leaves through the stomata and water take uprooting by the roots, epithelial and xylem tissue, then the reach into the leaves, and after the formation of process of photosynthesis, oxygen is leave out from the plants and sugar will be stored inside the plants. Reaction of photosynthesis is important. Carbon dioxide, 6 molecules of carbon dioxide react with the 12 molecules of water in presence of sunlight and inside the chlorophyll. Convert the glucose, make a 1 molecule of glucose C6H12O6 and 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. Photosynthesis involves the 3 steps. First is absorption of sunlight by chlorophyll. Second step is conversion of the light energy into chemical energy. This is an important one. Conversion of light energy into chemical energy, and hydrolysis of water we say, and light reaction and light phase reaction. See, one water molecule in presence of sunlight inside the chlorophyll convert into oxygen, and this oxygen is leave out from the body, and there is a hydrogen release into proton, one protons, and form the electrons, NADPH, etc. The water molecule split into hydrogen and oxygen in presence of sunlight using sunlight energy. The reduction of third step is reduction of carbon dioxide, dark phase reaction or dark reaction. They don't need the light. That is called formation of carbohydrate here. In the presence of carbon dioxide, light independent reaction inside Calvin cycle, they form the glucose molecules. See in the diagram. Light dependent reaction. When the light and water is needed, they convert into oxygen and also फॉर्म द ATP एंड NADPH फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ये दोनों क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स हैं. ATP एंड NADPH. These energies are utilized by carbon dioxide when entering into the light dependent reaction, and using these energy they convert the glucose. They form the glucose. Next, site of photosynthesis. Chloroplast in the leaf and chloroplast contain the chlorophyll green pigment is a site of photosynthesis. These are known as thylakoids, stroma, and outer membrane, inner membrane, lemma, and granum. Total bundle is called granum. Each thylakoid contain the procedure of photosynthesis, mechanism of photosynthesis. Next, the factor on which the photosynthesis depends and condition necessary for photosynthesis. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water. Their activities are inside the book. Read from the book. Next is stomata. These are the tiny pores present inside the epidermis of the leaf of a stem through which the gases exchange and transpiration occur. स्टोमेटा हमारे कहाँ पाए जाते हैं, टीनी पोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिकल लेयर ऑफ स्टेम. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. एक्सचेंज द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉसेज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. These are the guard cells which can help in the opening and closing of stomata. Chloroplast cells, stomatal pore, and subsidiary cells. So guard cells help in the opening and closing of stomata. Opening and closing of stomatal pore. The opening and the closing of the stomatal pores are controlled by the turgidity of guard cells. guard cells जब भी water आएगा तो swallow out हो जाएगी और stomata pore open हो जाएगा. जब water उसमें से निकल जाएगा तो वो close हो जाएगा. When the guard cells uptake water, fill with water from surrounding cells, they swell and becomes turgid body and enlarges their pore between them. That is opening of stomata. While when the water is released,
दे बिकम्स फेलिसिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर्स, स्टोमेटल क्लोजिंग। जब वाटर रिलीज हो जाता है तो फेलिसिड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है एंड क्लोज देयर पोर, स्टोमेटल क्लोजिंग। This is open stomata and this is closed stomata. Now significance of photosynthesis. Photosynthesis is the main way through which the solar energy is made available for the different living beings. And sorry, green plants are the main producers for the food in the ecosystem. All organisms directly or indirectly depend on the green plants for food. The process of photosynthesis also helps in maintaining the balance of the carbon dioxide and oxygen in the air. Next type of nutrition is heterotrophic nutrition. The mode of nutrition in which an organism take the food from another organism is called heterotrophic mode of nutrition. Organism other than green plants and blue-green algae follow the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition can be further divided into three types: saprophytic nutrition, holozoic nutrition, and parasitic nutrition. Saprophytic nutrition. In the saprophytic nutrition, the organism depends on the dead and decaying matter for the food is known as saprophytic nutrition. इसमें जो organism है food के लिए गले सड़ी चीज़ों पे depend करते हैं. All the decomposer follow the saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow the mode of nutrition. Next is parasitic nutrition. The organism which lives inside or outside the host body and derives the nutrition from the host body are called parasites. And this type of nutrition is called parasitic nutrition. For example, Cuscuta plant, ticks and mosquitoes are called as Plasmodium salmonella are the parasites. Holozoic nutrition. In the holozoic nutrition, the complex food is break down into simpler food is known as holozoic nutrition. In human, animals, amoeba, paramecium follow this holozoic mode of nutrition. In the holozoic nutrition, डाइजेशन ऑफ द फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड. इंजेशन मतलब इनटेक करना, फूड को इनटेक करने के बाद में डाइजेशन प्रोसेस होती है. दिस द डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म. होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपेंस इन द 5 स्टेप्स. ये सारे कॉन्टिन्यूशन में. फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन. ये पांचों आपको करेक्ट ऑर्डर में याद होनी चाहिए. स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड inside is called ingestion. Digestion, the process of breaking the complex food substance into simpler molecules is called digestion. Simple molecules thus obtained can be absorbed by the body. Absorption, the process of absorption of digested food is called absorption. Assimilation, the process of utilization of digested food for energy and for growth and their repair is called assimilation. Egestion, the process of removing the undigested food from the body is called egestion. Next is nutrition in amoeba. Amoeba feeds by the holozoic mode of nutrition. It engulfs the food particle with the help of pseudopodia and this process is called phagocytosis. जो अमीबा की फूड इनटेक करने की जो प्रोसेस है हम कहते हैं phagocytosis. वो अपनी pseudopodia की हेल्प से फूड को इनटेक करता है. The engulfed food gets enclosed into the food vacuoles. At the food vacuoles passes through the cytoplasm, digestion, absorption and the assimilation takes place. When the food vacuoles open to outside, egestion of food takes place. ये देखिए फर्स्ट स्टेप, this food particle of amoeba engulfed with the help of pseudopodia and now food particle become the food vacuole. अब फूड वैक्यूल से ये क्या करेगा, डाइजेशन करना स्टार्ट करेगा. एक्शन ऑफ एंजाइम हो जाएगा. हेयर द एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम होगा. नाउ रिलीजिंग द एनर्जी, थर्ड स्टेप. फिर फिफ्थ स्टेप में हमारा क्या चलेगा, इजेशन, इजेक्ट आउट हो जाएगा. न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट द होलोजोइक न्यूट्रिशन. हाउएवर देयर हैव द सीलिया दैट हेल्पिंग टू इनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रूव. ओरल ग्रूव के थ्रू क्या करता है, फूड इनगल्फ करता है. फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड इनक्लोजिंग द फूड. इट मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइकोलोसिस. And the food digestion of the food vacuoles is absorbed by the cytoplasm. Undigested food is given out by the tiny pore is called anal pore or cytopyle. He can engulf the food through here. Pelsil, flagellum, control vacuole, eye spot, ये इसके नाम हो गए. ठीक है, सेम अमीबा की तरह ये करता है बट इसके पास एनएस होता है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. The human beings are complex animals which have a complex digestive system.
Now, structure of the human digestive system. The human digestive system comprises of the alimentary canal and associated digestive glands. Alimentary canal, this is important. It compares the mouth. इसका order भी आपको correct याद होना चाहिए. Mouth, oesophagus, stomach, small intestine and large intestine. This is from the alimentary canal. Associated glands are salivary glands, gastric glands, liver and pancreas. Total how many glands? In digestion, 1, 2, 3 और 4. Now discuss with that. See in a diagram. First we intake the food with the help of mouth. Here the salivary gland release their saliva. Now food comes through the peristaltic movement in the stomach. Now after the stomach passes through the duodenum. Here the livers and pancreas secrete their enzymes. Now this food can pass through the small intestine. After some hours this food can pass through the large intestine and exit out from the body. Clear? Remember the names of the part. Now discuss one by one the complete one section. Mouth or buccal cavity. The mouth has the teeth and tongue, and salivary glands are also present in the mouth. The tongue has a gustatory receptor. Taste buds have the perceive the sense of taste. Now the tongue helps in the turning over the food so that the saliva can be properly mixed in it. Teeth is help in the breaking down the food into smaller particles so that the swallowing of the food becomes easier. Food को चबाना easier हो जाता है. सी ये हमारे पास teeth हो गए. See here is a teeth. टूथ से और टूथ के बाद में हमारे पास यहाँ पे salivary glands रिलीज करेगी saliva ऊपर से और नीचे से and mix with the mouth and pass it through the oesophagus. These are the names of the salivary glands: parotoid salivary gland, parotoid duct, sublingual salivary glands and sublingual salivary glands. 3 types of salivary glands. Salivary glands secrete saliva. Saliva makes the food slippery and makes it easy to swallow the food. Saliva also contains the enzymes salivary amylase and ptyalin. There are the 2 enzymes contained by saliva, ptyalin and salivary amylase. Salivary amylase digest the starch and convert into maltose or sucrose. We say starch convert into sugar or sucrose. Next, food passes through the oesophagus. Oesophagus taking the food from mouth to stomach by peristaltic movement. The movement rhythmic contraction. खाना जब हमारी फूड पाइप में एंटर करता है तो वो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से चलता है, यानी कि आगे आगे अपने आप मूवमेंट करता रहता है. उसे बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट. द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड. आगे फूड भेजने की प्रोसेस. स्टमक. स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन. इट इज J shaped bag like organ. Okay, the stomach is a bag-like organ. Highly muscular walls of the stomach help in the churning of food. The walls of the stomach secrete the hydrochloric acid, and this hydrochloric acid kills the germs which may present in the food. Moreover, it makes the medium inside the stomach as acidic. The acidic medium is necessary for gastric enzymes to work. The enzyme pepsin secreted in the stomach does partially digestion of protein. Protein digestion में कौन सा enzyme help करता है? Pepsin enzyme help करता है in digestion of protein. The mucus secreted by the walls of the stomach saves the inner lining of the stomach from the getting the damaged from crossing action of hydrochloric acid. Next is small intestine. The small intestine is the largest part of alimentary canal, about 20 feet long in humans, and it has the regions: duodenum, the region which follows the stomach; jejunum is the middle part of the, and the ileum is the lateral region. तो 3 पार्ट होते हैं. स्टमक के साथ जो कनेक्टेड होता है डेड्यूनम, और मिडिल पार्ट होता है आपका जेजुनम, और लास्ट पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है इलम. हैज़ द लेटर रीजन विच कंटिन्यूज फर्दर टू लार्ज इंटेस्टाइन. द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड व्हील. अ कॉमन पेनक्रेटिक डक्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड लीवर ओपन्स इन द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम में खुलता है कॉमन डक्ट. नेक्स्ट, विली और माइक्रोविली क्या है? द कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन and pancreatic juice coming from the pancreas, bile from the liver, and intestinal juice secreted by intestinal glands complete the digestion of food material. All the digested nutrients are absorbed by a long finger-like projection present in the ileum
और द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं उससे वो एब्जॉर्ब होता है। Thus, these small finger-like projection of the inner wall of intestine are called villi or villus. In the villus has the its cell membrane of the lumen side again folded into the microscopic pores called microvilli. Villi increase the surface area of the intestinal walls, making the available greater surface area for absorption process. Digested nutrients pass into the semi-permeable membrane of villi through the diffusion. Villi also help in the chemical digestion of food by secreting the digestive enzymes. This is the structure of digestion. Microvillis are hair-like projections, internal foldings, and endocytosis. Sept. These are called villis and other are called microvillis. Now next is liver. Liver is the largest gland in the human body. The liver manufactures the biles which get stored in the gallbladder. For the gallbladder, bile is released into small intestine and when required. Bile juice makes the medium basic for the action of pancreatic juice. Bile juice break down the large fat molecules, smaller fat molecules of enzyme acts upon them. देखिए, this is common bile duct which can connect with the later with the small intestine and stomach, and this is pancreas. Release the enzyme here. Common bile duct. Pancreas is a leaf-shaped gland which release the three types of enzyme pancreatic juice which help in the digestion of food. It's situated below the stomach. Bile and pancreatic juice go to the duodenum through the hepatopancreatic duct. Bile breaks down the fat molecules into smaller particles is called emulsification of fat. Fat bile juice emulsification process converted to small fat molecules. After that the enzymes lipase digest the fat into fatty acids and glycerol. जो एंजाइम लाइपेज है जो पेनक्रियास सिक्रेट करता है वो उसका नाम क्या है, लाइपेज है। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। फिर आता है ट्रिप्सिन और क्रोमोट्रिप्सिन। दे आर एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट इज अमाइलेज एंजाइम विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। दीज टाइप ऑफ थ्री एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द पेनक्रियास। द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द duodenum. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द jejunum. jejunum में कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन and the some water and the salt are absorbed by the walls of large intestine. After that the undigested food goes through the rectum from where it is expelled out through the anus और anus के थ्रू बाहर आ जाता है। Large intestine absorbs the excess of the water. The rest of the material is removed from the body via anus or ejection. So first part is completed. Now see here, this is small intestine, this is large intestine. When the small intestine passes the food here, then after that passes through the large intestine and through the rectum or anus comes out from the body. I hope all you all understand this chapter. So please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.